Assalamu alaikum and welcome back to the channel Sayyid Fazil Bukhari. I am Bisma and this week's topic is global alliances. We'll be discussing about AUKUS, the quadrilateral grouping, BRICS and the Five Eyes. This is like an abstract of the whole lecture. Five Eyes is the foremost alliance, global alliance जो कि कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए ने बनाई थी, जिसमें से बाद में फिर क्वाड एंड ऑकस ड्राइव हुई थी. Starting with the Five Eyes, it is an intelligence partnership. Five Eyes is like a watchdog that monitors the digital communications of citizens and foreign governments. एंग्लोफोन कंट्रीज ने ये अलायंस बनाई थी. एंग्लोफोन का मतलब है इंग्लिश नेशंस जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, वो वाली कंट्रीज को हम एंग्लोफोन कंट्रीज बोलते हैं. तो उसमें आ जाते हैं कनाडा, यूएसए, द यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. फाइव आइज का बेसिकली जो काम है वो है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन बाय इंटरसेप्टिंग प्राइवेट कम्युनिकेशन सच एज टेलीफोन कॉल्स, ईमेल्स, स्काइप कॉल्स एंड फैक्सेस एक्सेट्रा. इनके पास जो सोर्सेज होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लाइक द सैटेलाइट एंड इवन फाइबर ऑप्टिक केबल्स. The Five Eyes is so influential that they receive data from some of the leading technological companies in the world like Microsoft, Yahoo, Facebook, Skype and Apple. So basically ये जो information gather होती है, that is basically आप किसी कंट्री के अगेंस्ट कोई प्लॉय कर रहे हो, या आप कोई वॉर प्लान कर रहे हो, या कोई करप्शन है या कुछ एनीथिंग लाइक दैट, तो वो ये इनको पता चल जाता है. इनके इतने स्ट्रॉन्ग सोर्सेज होते हैं, दे आर लाइक वॉच डॉग्स, और वो हर कंट्री को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हर कंट्री के ऊपर एक इन्होंने वॉच डॉग एक आई रखी होती है. सो इंटेलिजेंस फ्रॉम फाइव आइज वाज यूज्ड फॉर द वियतनाम वॉर, द मिडिल ईस्ट क्राइसिस एंड आल्सो द वॉर ऑन टेरर. Even some very famous news channels like the Al Jazeera is also targeted by the Five Eyes. As you can see, it is the oldest standing alliance that was made against the Soviet Union. Recently, Japan has announced its formal membership in the Five Eyes in 2020. तो अब इसका जो नाम है वो Five Eyes and Japan हो जाएगा, because Five Eyes basically उन्होंने एंग्लोफोन कंट्रीज के लिए नाम रखा था जो इंग्लिश बोलती है. अब नाउ जापान डोंट स्पीक इंग्लिश, तो उनको हम Five Eyes and Japan कर देंगे. Next up is the AUKUS. As you all know, AUKUS is a trilateral security pact between Australia, the UK and the United States. It is the most recent global alliance established last year in September 2021. इसमें basically the three countries wanted to counter the influence of China in the Asia Pacific region. इसी वजह से the UK and USA allied with Australia, because Australia की जो strategic location है वो चाइना के करीब है, वो साउथ चाइना सी से भी करीब है, वो एशिया पैसिफिक से भी करीब है. तो इन्होंने इन दोनों कंट्रीज ने, यूएसए एंड यूके ने, ऑस्ट्रेलिया के साथ अलाई किया है सो दैट दे बोथ कैन हैव अ डायरेक्ट ऑपरेशनल बेस इन द रीजन. नाउ दिस इज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया. एज यू कैन सी इन द मैप कि जो स्टार बना हुआ है, दीज आर द ऑकस मिलिट्री फैसिलिटी प्रेजेंस. तो यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है, ये सारे स्टार्स हैं अराउंड द ग्लोब. सो ये बेसिकली जहाँ पे ज्यादा क्राउड है दैट इज नियर चाइना. तो ये दिस इज द साउथ चाइना सी जहाँ पे सिंगापुर है, जापान है. तो ऑस्ट्रेलिया के साथ यूएसए और यूके ने अलाय इसलिए किया है सो दैट दे कैन हैव अ डायरेक्ट ऑपरेशनल बेस इन दिस रीजन, जहां से उनकी ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है वो बहुत दूर है. दिस इज द यूनाइटेड किंगडम एंड दिस इज द यूनाइटेड स्टेट्स. हाउएवर ऑस्ट्रेलिया के साथ अलाई करने से उनको फायदा ये होगा कि वो अपनी न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन्स जो हैं वो यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं टू टारगेट चाइना इन द रीजन. नेक्स्ट वी हैव द क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग, ऑल्सो नोन एज क्वाड. इसका और ऑकस का पर्पस सेम ही है, दैट इज टू काउंटर चाइना इन द रीजन. जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है इन द जियो इकोनॉमिक्स वीडियो कि जियो इकोनॉमिक्स इज अ स्ट्रैटेजी टू कम्पीट इन द ग्लोबल अरीना फॉर दोज कंट्रीज स्पेशली जो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन शेयर नहीं करती, जिनके बॉर्डर्स मिले हुए नहीं हैं, जो ज्योग्राफिकली बहुत दूर दूर लोकेटेड हैं, तो वो जियो इकोनॉमिक्स के थ्रू कम्पीट करती हैं इन द ग्लोबल अरीना. तो अब यूएसए
चाइना से compete करने के लिए अपनी geographical location को तो adjust कर नहीं सकता, तो इसलिए they form these alliances with other countries like Japan, like Australia and India, तो वो चाइना के ज्यादा करीब हो सके। एक तो यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ क्लेम ऑन द इंटरनेशनल वाटर्स, लेकिन वो एक पूरा अपनी स्टेट छोड़ के सिर्फ एक राइवलरी को निभाने के लिए इट कांट चेंज इट्स लोकेशन, तो इसलिए फिर वो जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ अलाइ करके यूएस बिल्ड्स इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन बाय अलाइंग विद जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, व्हिच मेक्स द क्वाड। क्वाड और ऑकस का जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि ऑकस इज अ ट्राइलैटरल पैक्ट जिसमें 3 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए, और क्वाड में 4 कंट्रीज हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। Out of these 4 states, 2 of them are very near to the Chinese territory. So that was the main aim behind establishing alliances like Quad and AUKUS. Moving forward to BRICS. BRICS is a acronym for Brazil, Russia, India, China and South Africa. Basically ये एक global alliance इसलिए उन्होंने बनाई है because these countries claim to dominate the global economy by 2050. So just to have an influence around the globe, इन्होंने एक अलायंस बनाई है ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज जिसमें रशिया है, चाइना है, ब्राजील है। नाउ एज यू कैन सी ब्राजील इज लैटिन अमेरिका, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर राइवल्स एंड सेम गोज फॉर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो अलायंसेस होती हैं ये बेसिकली आपके कंट्री के फ्रेंड्स को शो करते हैं, आपका इन्फ्लुएंस शो करते हैं वर्ल्ड के ऊपर कि हमारे कैंप में कितनी कंट्रीज हैं और यूनाइटेड स्टेट्स की कैंप में कितनी कंट्रीज हैं। सो ब्रिक्स बेसिकली इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस लाइक ऑकस एंड क्वाड, इट इज एन इकोनॉमिक अलायंस जिसमें all these countries trade together and boost their economy and work for their economic benefits and national interests. That's it for today. I hope you find this lecture useful. See you again next week. Keep learning and keep watching. Sayyid Fazil Bukhari. Take care. Allah Hafiz.